So here, welcome to this another episode with me, Ashi, and today I have somebody very special with me. I mean, I think मेरे लिए तो ये आज दिन का 5th interview है, and I think ये वाला इंटरव्यू इसलिए बहुत है because you know Richa is smiling since she joined, and होता क्या है ना, आपने सुना होगा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है. So I think by seeing your smile, I think मुझे जो I was feeling little कि कितने इंटरव्यूज आज होंगे. I get that motivation कि नहीं यार इसको भी लेना तो बनता है. तो we'll start with the first question कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं IIM अहमदाबाद लगा हुआ है. हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है to get into this college, जिसके लिए CAT is the only way to get into the college. So I'll ask Richa to first of all introduce yourself. I have graduated from Odisha with my graduation in horticulture, and then I joined IIM Ahmedabad for PGP FABM program. So 2 years back, I was also in the same line. I was preparing for CAT. I wanted to join IIM Ahmedabad at any cost. अब हम एक दूसरे फेज के क्वेश्चंस पे जाते हैं, जहाँ पे बात होती है कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में सबसे पहले जो कॉलेज आता है वो IIM अहमदाबाद आता है. आई मीन देयर इज नो रियलिटी चेक व्हेन इट कम्स टू IIM अहमदाबाद. पर जब हम थोड़ी से डाइवर्सिफाई कोर्सेज की बात कर रहे होते हैं, right? I mean, there's this thing called general MBA, right? आप you are pursuing MBA in food and agri business. तो वहां पे जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनके दिमाग में एक तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे MBA करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? दूसरा कि यू नो जनरल में जाना चाहिए बिकॉज आपके पास अभी भी वो ऑप्शन है स्विच करने का, राइट? कि आप कहीं ना कहीं भले आपने फूड से कर रखा है, एग्रीकल्चर से कर रखा है, आप जनरल MBA जाके कर सकते हो और आप यू नो अपना जो स्ट्रीम्स है उसको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, या फिर जिस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी में जाके MBA करने का. तो इसमें व्हाट प्रोसेस यू हैव, बिकॉज आई थिंक यू आर सराउंडेड विद ऑल काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने कहीं जिनका अंडरग्रेड सेम डोमेन में रहा है. तो उस पे what is your suggestion to all those aspirants? Many of my friends here, they converted PGP at IIM Ahmedabad, also PGP FABM at IIM Ahmedabad, but they chose PGP FABM over PGP. Then we asked them कि why? Because people are fighting for PGP and you are getting a seat there. तो आप FABM क्यों आना चाहते हो? Then they said very good thing that actually touched my heart. They said it's demand supply curve का है बातें पूरे, क्योंकि अगर आप देखो जो जनरल MBA का डिमांड है उतना सप्लाई भी है, बिकॉज ABCL के हर साल 400 लोग पास आउट हो रहे हैं हर एक इंस्टीट्यूट से. बट व्हाट अबाउट द डिमांड एट एग्री सेक्टर? आप फूड के कोई भी कंपनी ले लो, कोका कोला, देन पेप्सिको, दे वांट ग्रेजुएट्स, दे वांट समवन विद द प्रोफिशिएंसी इन दिस सेक्टर. और कितने लोग हैं जो कि पास होते हैं हर साल फ्रॉम दिस सेक्टर. So if you see in IIMs, only IIM Ahmedabad and Lucknow has the program, Food and Agribusiness Management program. So there is demand supply gap there that you can actually bridge up. और वहाँ पे तुम्हारा डिमांड, तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड काफी ज्यादा है इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू अ जनरल MBA. When you are from a very niche background, you want to go into a sector that is different from what you have learned for the last 4 years of your graduation life. But at the same time, there are companies, for example, in IIM Ahmedabad, there are common firms like Marico, Pidilite, RB, PNG. They also hire from FABM because they know these people have a very good rural psychology education. They know how to talk to people of the grassroots level, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में वही पढ़ते हैं, right? तो अब अगर आप देखो कि HUL का 30% of the revenue comes from rural areas only. So they want managers who can handle those rural areas. So वहाँ पे हमें एक थोड़ा ज्यादा हमें स्ट्रेंथ हमारा काम करता है एज कम्पेयर टू अ BCom or an economics person. So that is why I would suggest to those people who have such niche background, you have to play with your strength. Then in your near future, you can also explore other sectors. It's not like कि आप यहाँ पे ही बंद हो गए. If you are going to PepsiCo, तो आपको पूरा लाइफ टाइम PepsiCo पे ही काम करना है. You can always switch if you want to. If you are liking the sector, then yeah, the sector is open for you. I think that's a pretty clear answer, right? तो in short, you know, कि अगर हम बात करें तो जनरल में there's a huge competition, right? अगर हम even अच्छे टॉप कॉलेजेस की भी बात करें, but when it comes to these niche segments, यहाँ पे requirement तो है, but उसके comparison लोग काफी कम है, and especially if they need people from you know tier 1 category colleges, तो बहुत कम colleges ही जो है तो food और agri में you know MBA
ऑफर करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि अगर हम जनरल एमबीए की बात करें IIM अहमदाबाद में, तो दे हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट जिस पे स्टूडेंट्स को कॉल आता है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड इन कैट for a general candidate? So the minimum percentile required for both PGP and FABM is the same. But if you see in the website, you will see it is 80 percentile. Like for all the section, if I'm right, then it's 80, and also the overall percentile required is 80 percentile. But on the basis of, for example, if there is a general engineer male, 99 नहीं होगा तो उसका नहीं होगा, because the number of people competing for the same seat is higher in GEM category, जो कि दूसरों के लिए कम होगा. जैसे कि बीकॉम वाला कोई हो तो वो कम परसेंटाइल में गेट अ कॉल, राइट? द सेम वे इन एफएबीएम आल्सो इट वर्क्स. कोई एग्रीकल्चर वाला कितना अप्लाई कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर वाले कितना अप्लाई कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द रिलेटिव परसेंटाइल अमंग द पीपल. फॉर एग्जांपल, पीपल विथ 98 99 percentile also join PGP FABM program, but people with 80 percentile also get a call, क्योंकि number of people, they want 1,000 or 2,000 people, and from them they will only select 47 people. So that's why people get a call, but you have to convert the interview as well. At the end, it is a composite score. तो अभी लाइक यू मेंशन इंटरव्यू, जनरल के इंटरव्यूज और मुझे लगता है फूड एंड एग्री और बिजनेस मैनेजमेंट के इंटरव्यूज में काफी डिफरेंस होता है, बिकॉज दिस इज अ नीश स्पेशलाइजेशन. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू होलसम योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? आई मीन, लेट्स से स्टूडेंट्स are aiming for IIM Ahmedabad for the same course. So, I mean, how they can prepare themselves for the interview questions and whatever the other rounds of shortlisting IIM Ahmedabad have. So for the interview, that is the same process. AWT PI. AWT will be the same age of the general MBA. In PI, like what I have seen, so one professor was from CME area, that is Center for Management in Agriculture, and one professor was from general MBA. For example, my interview was taken by the PGP chairperson right now, who is Professor Abhiman Das. It's not like they will only ask you about your graduation. They want to see what different you want to bring to the table, because in IIM Ahmedabad it is a case based curriculum, और आपका फर्स्ट ईयर पीजीपी के साथ सेम होता है. यू शेयर द क्लासरूम, राइट? तो आप क्या अलग ला सकते हो? तो जैसे कि एक बार ऐसे जीडी हो रहा था, ऐसे डिस्कशन हो रहा था, देयर वाज अ टर्म लाइक ब्लू, की एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है ब्लू, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग, सारे आईटी इंजीनियर ब्लू चिप के बारे में बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. तो कोई एग्रीकल्चर वाला जो भी बंदा है या बंदी, दे विल स्टार्ट विथ ब्लू रेवोल्यूशन, फिश कल्चर, कैसे आप फिशरी को ज्यादा कर सकते हो सो दैट लाइवलीहुड ऑफ पीपल विल इंक्रीज, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी विल गेट इन पार विथ द इंटरनेशनल इकोनॉमी. तो वो जो आप अलग कुछ लाते हो टेबल पे, दैट्स व्हाट दे आर सर्चिंग अबाउट. क्योंकि आपका केस बेस्ड करिकुलम होगा, जितना डाइवर्सिफाइड बैच होगा उतना अच्छा केस डिस्कशन होगा. You cannot just talk about single thing. So that's why in FABM interview you will see they want to see your competency, your logical reasoning, and also what is different in you. That's why it's very important to build your profile. सिर्फ आपके मार्क्स और इंटरव्यू से नहीं होता. Your profile is also important. आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या किया है, या फिर आपने कुछ एनजीओ में काम करा है, या फिर आपने कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करने का आपने कभी कोशिश किया था, या फिर कुछ आपने अच्छा इंटर्नशिप किया है, कभी ट्रेडिंग में आपने काम किया है. Something of that sort, which will divert the interview towards the thing that you are strong at. So I think that's pretty much about the selection criteria. Now, I mean, I think you are almost at the urge of your post-graduation. How you wholesome describe your journey, your experiences at IIM Ahmedabad, and how you sum it up. So the experience at IIM Ahmedabad was amazing, that I didn't get so far in my life, because every day you wait for a new challenge. You have to prove yourself that you are the best and you deserve a seat at IIM Ahmedabad, because the environment is so competitive and everyone has something to bring about. So you have to show people why you are here. And there are 50 clubs. You have to choose, you have to prioritize your work. Academics में focus करना है, extra curricular में करना है, network बनानी है, social network ज़्यादा होना है, या फिर कुछ काम करना है जैसे कि प्लेसकॉम में हो, या फिर आप बैच रिप्रेजेंटेटिव हो, लीडरशिप कोई रोल लेना है पीओआर के लिए. सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, एकेडमिक्स पीओआर, एक्स्ट्रा करिकुलर, और एक्स्ट्रा करिकुलर पीओआर, एकेडमिक्स. इट्स अप टू यू. तो वो प्रायोरिटाइज करना, दैट मेड मी अ वेरी गुड डिसीजन मेकर. तो अभी हमारा एक कोर्स था एट द एंड ऑफ एमबीए जर्नी, देयर वाज अ कोर्स बाय प्रोफेसर सरल मुखर्जी,
The Remains of MBA. So that was a very philosophical course जहाँ पे हम नॉवेल पढ़ते हैं, एक नोबेल लॉरेट का नॉवेल पढ़ते हैं and we connect it with IIM Ahmedabad journey. तो वहाँ पे ऐसा पता चला कि you have regrets and you have to own it. So this MBA makes you a very good decision maker and also you know how to own your mistakes because people will make mistake every time. Right. If you have a life, you have to make mistake and you have to learn from it. That's what I am Ahmedabad learned to it. Okay. And see, I mean, we all know the placement starts at IIM Ahmedabad, but is there any like difference when it comes to placement, when it comes to general MBA or the FDM course? So, I mean, is there any difference? Yeah, the placements are pretty good for the specialization what you are currently doing. So, ये भी एक question है जो students के दिमाग में आ सकता है, right? What they can expect. So that is something what I want to ask. So for in IIM Ahmedabad, the placements are different for PGP and FABM. There are two placements committee, but the placements happen parallelly. जो दिन में PGP का होता है, तब FABM का भी होता है. So some of the firms are common for both PGP and FABM. जैसे कि अब मैंने आप पहले भी mention किया PNG, RB, they open for PGP as well as FABM, and then you have to compete with the PGP guys to get the role. और जहाँ पे same role है, for example, if they are opening for area sales manager or MT, then they pay the same to PGP and FABM. And there are some firms which are only for PGP, and there are some firms pertaining to the area of agriculture which are only for FABM. So यहाँ पे अगर आप देखो ratio तो ऐसे 50% startups and 50% MNCs होते हैं. But if you see the average salary, तो yeah, FABM का कम होता है as compared to PGP for sure. But you are not confined to only placements here. 4 years down the line, we have seen our seniors when we talk to our alums, they reach the same level as that of the PGP. So, I mean, again, means you all have some policies and everything, but can you just tell that what is the average package at, FABM? At IIM Ahmedabad. So you can also check the IPRS report that is available at Ahmedabad website. So for last year, it was somewhere around 21-22 LPA. And any suggestion what you give to all those aspirants who are watching you? I mean, other than your smile, I mean, I think I've taken a lot of interviews, right? Most of the time, I find candidates a lot more serious, or after even getting placed, they're not happy that what they have achieved. So this is very rare. That is the reason I'm quite specifying. So apart from that, what you want to suggest it to the audience? I would suggest people think that to get into IIM Ahmedabad, CAT is the way. But CAT is not only the way. You also have to crack the PI. So start building your profile from the beginning only. If you are targeting CAT 2024, then you have ample amount of time. Start doing something that will differentiate yourself from all other aspirants in the pool. And that way you can get into IIM, any IIM very easily. How you can do your profile? By doing something in extracurricular, national level कुछ अगर आप कर सकते हो, then हाँ, that will be very different. अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हो तो कोई इंटर्नशिप या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो फैशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, समथिंग रिलेटेड टू दैट, कुछ तो अलग आपको करना ही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर इंटरव्यू ऑल्सो, एंड एन इंटरव्यू कैन ओनली बी एफिशिएंट इफ यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल. You have to build your profile, you have to differentiate yourself from all the people in the pool, because the first question in your interview will be tell me about yourself. And an interviewer who is interviewing the candidate like 20 candidates a day, 30 candidates a day, they should remember you by something which is very different in yourself, right? So that can only be done through something that is very different. For example, I had a startup, I had a social enterprise before joining IIM Ahmedabad. Achha. And I stood up, that's why I stood up in the total pool because of that. Because everyone didn't do that. Right. So that's how you have to build your profile, because 50% of the weightage is from interview itself. But when the time, like if in November the CAT is there, from August to November, you have to focus on CAT only. And it is very difficult to increase your percentile from 99.1 to 99.7. So that's why you have to give mock regularly. And it's a state of mind. It's not about your efficiency. क्योंकि कोई बच्चे से डर के भी डीडे पे एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं. दैट इज वाई एडमिट कार्ड आता है, आपका कौन से टाइम पे कैट का एग्जाम है, देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक एट दैट टाइम ओनली, सो दैट आपके माइंड को पता है एट व्हाट टाइम इट शुड बी एक्टिव, इट शुड बी मोस्ट एक्टिव. आई डिड दैट क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे दिया था मेरा कैट, एंड देन दैट वाज 2 hours कैट, 12 to 2, जो हमारा लंच का टाइम होता है.
लोगों को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है. So I used to give mock test during 12 to 2 only. So that on the day मेरे को भूख नहीं लगेगा, मेरा mind तभी active होगा. So that's how I did it. So Okay. I think that is a very good strategy to ace the D-Day. I think, I've learned a lot of things from this specific interview. And I'll definitely, tell you that, there is this one different vibe. I don't know, apart from that social enterprise or anything with you, which I can also sense it, right? So keep that spark, right? Because yahi ek cheez hai, when you see corporates, sub disappoint hai, even after having good packages, पर ये स्माइल जो है ना, आई मीन आप कितने ही थके हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, दैट इज लाइक चलो ठीक है, मजा आ रहा है. So thank you so much, Richa, for your time. It was, trust me, literally amazing interacting with you. I mean, I have taken a lot of interviews, but it was more of a serious kind of a conversation जहाँ मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं हंसूंगी तो what they feel like. तो बहुत मजा आया मुझे, and I think जितने भी students ये वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत मजा आएगा. I'm 110% sure. So thank you so much for your time, and it was great interacting with you. Thank you, Arshi, for giving me the opportunity to share my experience on a platform. Thank you. Yeah, thank you.